Hello, beautiful souls. I hope everyone is doing great. सबका वधिया हो रहा है, सबकी बल्ले बल्ले हो रही है और नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस जर्नी में ऑफ गुड हेल्थ, ऑफ वेल्थ, ऑफ अबंडेंस, ऑफ होलिस्टिक वेलनेस हम छोटे छोटे टारगेट्स बना के स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते जाएंगे और बेटर होते जाएंगे बिकॉज वी ऑल डिजर्व टू ग्रो एंड ग्लो. वेलकम टू द चैनल नेहा द एक्सप्लोरर. तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अबाउट वेलनेस. And wellness is not just about the physical or the mental health, but there are 8 different dimensions of wellness. So let's start and let's know about these different 5, 6, 7, 8. Yes, 8 dimensions of wellness. Are you ready? जिन 8 dimensions की मैं आज बात करने वाली हूँ, they are independent 8 dimensions. Yet, they are really not that independent. I mean they are connected to each other, they are interdependent to each other. जैसे हम कहते हैं मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बट आरंट वी ऑल कनेक्टेड? मतलब कितने भी हम इंडिपेंडेंट हो, हमारे आसपास की चीज़ें हमें इम्पैक्ट डालती हैं. वैसे ही ये डिफरेंट 8 डायमेंशंस जो है, चाहे फंक्शन कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंटली, बट दे आर सो कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर सो इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर कि एक में भी अगर डमाडोल है तो वो और भी डायमेंशंस को इम्पैक्ट डालने लगता है. इसीलिए वेलनेस, कंप्लीट वेलनेस, होलिस्टिक वेलनेस के लिए हम अब से ध्यान देंगे इन सारे 8 डायमेंशन पर. सो लेट्स स्टार्ट विद 8 डायमेंशंस ऑफ वेलनेस. याद है बचपन में रेनबो के कलर्स याद करने के लिए हमें सिखाया जाता था विप क्योर. ऐसे ही मैंने भी आपके लिए बनाया है ताकि आप आसानी से याद कर पाए. सो दीज आर द 8 डायमेंशंस और इसका नाम मैंने दिया है पिस सो फी ई. यस, पिस सो फी ई. नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं है ये अलग से. दीज आर बेसिकली द starting alphabet of every 8 dimension, where P stands for physical, E stands for emotional, S stands for social. The next S stands for spiritual, O stands for occupational, F stands for financial, I stands for नहीं इंटेलिजेंस नहीं बट मैचिंग इंटेलेक्चुअल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ई हमारा आखिरी स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल. अब मानते हो ना, सारे हैं ना इम्पोर्टेंट, तो एक एक करके करते हैं सबके बारे में बात. तो सबसे पहले बात करते हैं P फॉर फिजिकल. यस, फिजिकल डायमेंशन, आवर फर्स्ट डायमेंशन. इमेजिन करिए कोई पूरी साल मेहनत कर रहा था, बड़ी फर्स्ट क्लास मेहनत हुई, बिल्कुल रेडी है एंट्रेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए या फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन हो गए बीमार एक दिन पहले. हो गया ना सब कुछ खराब. We know the importance of physical wellness, physical health in our life. We know how, if it's going to get adversely impacted, will or can or may destroy all other areas of our life. This body is actually a tool, है ना. इसी के थ्रू तो हम सारे एक्शंस कर रहे हैं. अगर ये टूल ही खराब हो गया, ये टूल ही हेल्दी नहीं रहा, तो हम वो करेंगे कैसे? I mean, we can have the best of the ideas in the mind, but if my body, my physical health is not allowing me to perform the activities, the right actions, the idea will die within me. So that is the importance of our physical health, our physical well-being. And to make sure that we are physically healthy, we need to focus on right diet, on living an active lifestyle, on properly dedicating certain amount of time every day
on some type of exercises. And sleep is very important. At times we just sacrifice our sleep and we think चलो ना काम करते रहो, करो, बहुत अच्छी बात है, बट अ गुड स्लीप इज इम्पॉर्टेंट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग आवर्स. आप 10 घंटे सो, नहीं उतनी तो चाहिए ही नहीं, इवन दैट इज ऑल्सो बैड. लेकिन अपनी बॉडी की हेल्थ, और हर किसी का डिफरेंट होता है. आई हैव सीन पीपल हु स्लीप फॉर 4 hours एंड लिविंग एन एक्टिव लाइफस्टाइल, बट इट डिपेंड्स ऑन यू. बट आई फील मैक्सिमम एज एन adult 6-7 hours is sufficient, but it should be a good sleep, a deep sleep, a sleep which is actually giving that rest to the body, so that आप सोते हो, बाकी ऑर्गन्स तो फिर भी काम कर रहे होते हैं, पर जब आप जाग रहे होते हो ना, तो उन पे और ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि आपकी एनर्जी उन कामों में भी जा रही है और उनको तो अपने काम करने ही हैं. बट व्हेन यू स्लीप दे गेट द फुल एनर्जी to deal with their actions, to deal with their work, their respective work. So body actually does not sleep, but we sleep so that the body can act even more properly. और जब हम इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो हम बीमार कम पड़ते हैं, और जब हम कम बीमार पड़ते हैं then we are ready to avail all the opportunities in our life. So are we going to take care of our physical health? Of course we will. The second one is E, for emotional well-being. Now, when we talk about emotional well-being, we are of course talking about our mental health. Physical के बाद हम आ गए हैं mental health पे. Coming up with one more example that we face in our day-to-day life. Not day-to-day, but हमारी lifetime में ये चीज़ें होती रहती हैं. Again, कितने भी talented हम क्यों ना हो, अगर इमोशनली हम बहुत डाउन फील कर रहे हैं, इफ यू आर फीलिंग कॉन्स्टेंट सैडनेस, आई वुड नॉट लाइक टू यूज द वर्ड डिप्रेशन बिकॉज इट्स अ क्लिनिकल वर्ड, बट यू नो इफ यू आर जस्ट ग्लूमी, फीलिंग lethargic, not physically but at mental level, कि कुछ मन ही नहीं कर रहा, पैनिक हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ऐसी चीज़ें अगर हम फेस कर रहे हैं, हमारा इमोशंस पे कोई कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, तो क्या हम उन टैलेंट्स को अप्लाई कर पाएंगे? क्या इमोशनली अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो वो और एरियाज में इम्पैक्ट नहीं डालेगा? ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि डालेगा, और आई एम श्योर कि हम लोग एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं कि वो कैसे डाल देता है. वी मस्ट बी हैविंग लॉट ऑफ आवर ओन एग्जाम्पल्स. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग इमोशनली वेल, ऑफ बीइंग मेंटली स्ट्रॉन्ग. और कैसे कर सकते हैं हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग और अपने इमोशनल वेलबींग पे ध्यान? बाय डूइंग वेरी सिंपल एक्टिविटीज़ like engaging in some hobbies. You know, hobby is the activities that you don't do for money, but you do because the pleasure that you get doing that. Different people have different hobbies, so selecting whatever is working for you, whatever is best for you, whatever you wish to do. Spending time with nature, now whether it's your hobby or not, it's a human need, it's the need of our body. चाहे हम अपने आप को कितना भी कह दें हम सिविलाइज्ड हैं, टेक्नोलॉजिकली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ दे रही है टेक्नोलॉजी हमें, एंड वी आर ऑल थैंकफुल फॉर दैट. बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी यू एंड आई आर कनेक्टिंग, बट वी रिक्वायर नेचर, दी सेल्स, दिस माइंड, you know, the lungs, we require nature, we require good air to breathe. We can't live without that. So be spending certain amount of time in nature with plants, walking on the grass, with the animal sounds around also soothe our mind, our brain. We can use certain tools, techniques, asanas and pranayams, breathing exercises of yoga. It is very helpful for our mental well-being, for our emotional well-being. You can also engage yourself into mild meditations, not the deeper one, like focusing more on self-relaxation, on relaxing the body parts. You can learn progressive relaxation as well as positive self-talk. So these are the simple things that can help us to stay emotionally well. Let's talk about the third dimension of wellness, that is S for social. Yes, social wellness.
फिजिकली बढ़िया हैं, मेंटली बढ़िया हैं, पर घर बैठे रहेंगे तो क्या होगा? It's a human desire as well as a need to be surrounded by people. We want to network with people. We want to have friends. We want to have a social life. And that is also important for our growth. If we are, no matter how high IQ our intelligence is, we can actually grow in every aspect only when we are moving out and connecting with people. So that is the role of social wellness, that we want to be surrounded by positive people who can actually help us in our growth. If we are surrounded by people who are draining our energy, if we are surrounded with people who are constantly criticizing us, pulling us down, that will again impact on different dimensions. I mean, especially the first two we have discussed. It will eventually have impact on our emotions and on our physical health also. So, to take care of our social wellness, just make sure that you have right people around you, and also that you're constantly making effort by interacting with more and more like-minded people. You can join hobby classes, you can go out and join different groups. You can start interacting with people who are around you. If you have joined a new job, introduce yourself, and just take one thing into consideration, that stay authentic. Because if you're going to stay authentic, you will be building a strong and long term relationship. Now, let's talk about our second S, but the fourth dimension of wellness, that is S for spirituality. Yes, spiritual wellness. Spiritual wellness or spirituality has nothing to do with religion. At times, we misunderstand that. People of any religion can be spiritual or not spiritual, or people who just do not associate themselves with any religion, they can still be spiritual. Because spirituality is all about connecting with your authentic self, finding your inner self, finding your inner meanings, your true meanings, finding your true purpose. We can be very complete in other dimensions of life and still be struggling with these spiritual evolutionary questions. And we are constantly transforming and moving towards our own soul. So, spiritual wellness plays a very major role for us, for our life, to become holistic. कि हम संपूर्ण महसूस कर सके. कई बार ऐसा होता है ना, आपने बहुतों को देखा होगा कि इवन फॉर डिप्रेशन मैंने ये बहुत बार देखा है, और वो और ज़्यादा इरिटेटिंग होता है. लाइक इट हैज़ हैपेंड विद लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स वेयर दे यूज्ड टू से कि सब कुछ तो अच्छा है हमारी लाइफ में, लोग भी बोलते हैं, और हमें इरिटेशन होती है कि जब सब कुछ अच्छा है तो फिर भी हम कहीं ना कहीं अंदर से अच्छा महसूस क्यों नहीं कर रहे. मैंने ये देखा है कि स्पिरिचुअलिटी की जो फर्स्ट कॉलिंग आती है ना, जब आप अंदर की तरफ खिंचते हैं, उसके सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप्स ही होते हैं, बट वो एक्चुअली क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं होता, बट सिम्टम्स बहुत बहुत सिमिलर होते हैं. तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट वो एक्चुअली यही होता है कि हम एक एवोल्यूशनरी क्राइसिस की तरफ चल रहे होते हैं, क्योंकि बाकी डायमेंशंस तो पूरे हो गए, तो अब यूनिवर्स क्या कहेगा, नॉक नॉक, इस तरफ ध्यान दो. तो आप उस तरफ ध्यान दीजिए. और कौन सी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं? अगेन मैं योग की तो बात करूँगी ही करूँगी, बिकॉज योग ऑल्सो हैज़ नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन, राइट. तो आप योग का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप वो चीज़ें करिए जिसको करने से आपको खुशी मिल रही है. आर्ट, क्रिएटिविटी, राइटिंग, फ्री फ्लो राइटिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोइंग टू अ हॉबी क्लास, बट जस्ट putting whatever is coming in within you outside. Because in this journey of spirituality, you can find guides and gurus, but ultimately you need to be your own guru, and you are your own guru. So ये सारी चीज़ों से आप eventually अपने क्वेश्चंस के आंसर अपने ही अंदर से ढूंढ पाएंगे, या यूनिवर्स से ढूंढ पाएंगे. और जिससे जैसे आपको आंसर मिलते जाएंगे, you will feel whole, you will feel well, and you will feel complete. Let's move to our next dimension of wellness, which is O for occupation. सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर काम करे बगैर घर बैठे हैं
तो सब कहेंगे कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है ना? दिस द वर्ड पीपल यूज एंड मैं नहीं बोलना चाह रही। तो ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी which is giving us a decent income so that we can live a life on our own and we can take care of our family, we can take care of our responsibilities which are most of the time associated with money. मैं उससे बात क्या कह रही हूँ, जैसे ऑब्वियसली आप किसी को प्यार दे सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें तो बिना पैसों की होती है ना, और वो तो प्राइसलेस है और बहुत प्रीशियस है, नो डाउट। लेकिन कोई बीमार पड़ गया, डॉक्टर के लिए जाना है, इलाज कराना है, पैसा लगेगा। बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, पैसा लगेगा। शादी करनी है, पैसा लगेगा। घर बनाना है, पैसा लगेगा। कहाँ से आएगा? ऑक्यूपेशन से, आपके काम से। और जिस काम में आप जिंदगी के कितना टाइम लगाते हैं, मतलब मॉर्निंग आप मान के चलिए 25 ईयर से आपने शुरू किया, 60s तक हम करते ही रहते हैं, तो सोचिए कितना टाइम हम एक काम में लगाते हैं, एंड दैट टू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट टिल इवनिंग. So it's very important that we choose an occupation that is right for us. And how to find a right occupation? By knowing कि हमारी cost of living क्या है, तो हम उस occupation को चुने जो हमें उतना income दे पाए. एकदम से नहीं होगा, but at least हमें पता हो कि हाँ eventually ये occupation हमें इतना income generate कर देगा. Second thing is knowing your interest, कि मेरे को किस चीज़ में interest है, क्या चीज़ काम करने में मुझे अच्छा लगता है. And थर्ड इज माई एप्टीट्यूड. इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड ही नहीं है, तो मेहनत भी करते रहोगे तो उतने रिजल्ट्स नहीं आएंगे. सो नोइंग योर एप्टीट्यूड कि हाँ इस चीज़ में मैं जेन्युइनली अच्छा हूँ, मुझे आसानी से समझ आती है, मैं ये कर सकती हूँ. जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, आपका एप्टीट्यूड है, आपका राइट एटीट्यूड है, उनको जानकर आप एक राइट करियर अपने लिए चुन सकते हैं. वो आपका बनता है ऑक्यूपेशन. और जब आप ठीक तरीके से अपना ऑक्यूपेशन करते हैं तो आप फील करते हैं वेल. And this is the occupational wellness. And the next dimension of wellness is, yes, you guessed it right, it's financial wellness. Well, अब के टाइम पे तो इतनी इन्फ्लेशन के बाद मैं ये नहीं कह सकती to live a good life you need money, because now even to live an ordinary life we need good amount of money. Education, health, anything. I mean, क्या है? What is there without money? Your crush, your date, your partner may also leave you if you are financially struggling all the time, right? So financial wellness plays a very, very crucial role now. Even to maintain other wellnesses like body, maintaining health for body, for mind, we need good amount of money. All those gym lovers will understand what I'm talking about. I mean, these protein shakes and the gym fees, they are pretty expensive. उनको साइड भी कर दो तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, और उनके लिए हमें फाइनेंसेस ही चाहिए. बट फाइनेंशियल वेलनेस के लिए सिर्फ मनी कमाना इम्पॉर्टेंट नहीं है. Even to manage our money properly is the most important thing to live a stress-free financially related life. We should be knowing how much we are going to spend and where we are spending. We should be knowing how much to save and how much to invest, because we may not be able to work endlessly through the last breath of our life. And why should we? I personally feel we should all be planning for our retirement and then live a golden period, which is only possible if we have right amount of financial freedom. Because अगर आप उस स्टेज में डिपेंडेंट हो अपने बच्चों पे, तब भी आपको बार बार अपना दिल मारना पड़ सकता है, राइट? सो कैसे हम कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल वेलनेस का ध्यान? अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट. The next dimension is intellectual wellness. Now, intellectualism is all about constantly gaining knowledge. You know, it is a desire of a human being to keep learning into different fields. So, कैसे कर सकते हैं हम अपने आप को intellectually well? You can engage in different courses. You can focus on developing different skills. You can read
books, magazines, newspapers. So just keep learning. And when we are constantly learning, it also enhances our memory, right? So there is where intellectual wellness plays a very important role. And when we are intellectually well, it is constantly growing our mind, which in turn helps us to make the right decisions for our life. और जब हम करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं, करेक्ट डिसीजन ऑन आवर हेल्थ, करेक्ट डिसीजन ऑन आवर माइंड, करेक्ट डिसीजन ऑन आवर ऑक्यूपेशन, on the way we manage our social life, on the way we manage our finances. देखिए कैसे है ना इंटरडिपेंडेंट ये सब. And here we come to the last one, E for environment, the environment wellness. Now imagine you being healthy, living a very financially stable life with the right occupation, fine social life, emotionally भी ठीक हो, लेकिन आस पास है गंदगी, कचरा, कूड़ा, गंदा पानी. कब तक रहेंगे मैम हम ठीक फिर फिजिकली इमोशनली? नहीं रह सकते ना. We all need environment, the right environment for us to flourish. Environmental wellness is something that actually gives us the holistic wellness. And when I talk about environment, it is not just the social environment. It is also the nature related environment. I mean, देखिए जब भी पोल्यूशन बढ़ जाता है कितनी हाहाकार मच जाती है, फिर हम बीमार पड़ने लगते हैं इवेंचुअली. हम अपने आप को घरों में बंद करने लगते हैं. लेकिन घर में बंद रह के तो कोई खुश नहीं हो सकता ना, चाहे घर हम सोने का ही क्यों ना बना ले. So that is the importance of environmental wellness, and that is the reason we as beings of this planet have a responsibility towards our nature, towards our environment. Not because our nature needs us, but because we need nature. So please, let's live a responsible life. At least let's try our best. जैसे आई अंडरस्टैंड, मैंने भी बहुत ट्राई किया है, बट बिल्कुल ज़ीरो प्लास्टिक तो हो ही नहीं पाता. कुछ ना कुछ फॉर्म में तो हो ही जाता है. बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू सेग्रीगेट आर गार्बेज. एटलीस्ट वी कैन टेक अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितना हो सके क्यों ना रीयूज़ करें अपनी चीज़ों को. कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे नए कपड़े ही हर बार पहन कर आने हैं. आई कैन रिपीट माई क्लोथ्स, I can repeat my stuffs at home, and I can also share, right? अगर किसी के अब लग रहा है उसके यूज़ की नहीं है, why not? There's nothing wrong in it. इसमें कोई कॉम्प्लेक्स वाली बात होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज सबसे पहले वेलनेस. और अगर एनवायरमेंटली वेल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बाकी सारे डायमेंशंस में भी इम्पैक्ट आता ही रहेगा. So here we have talked about 8 dimensions of wellness. I hope आप इन सारे dimensions पे ध्यान देंगे ताकि हम holistically well रहें, खुश रहें, खुश औरों को भी रखें. Thank you for watching. Thank you for connecting with me. And just stay in touch. ऐसे ही मैं बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे चीज़ें लाती रहूँगी और आप भी बताते रहिएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं. If it's related to finance or psychology, travel or food or lifestyle, I am there for you to bring everything. Thank you.